Okay, so am I audible? Yes, am I audible? Okay, okay, let's continue. So what we are checking? We are checking that S is equivalent to S2 or not. So we are checking the first condition, that is the read operations. So we are checking for the read operation. So this read operation is matching, no problem. What about this one? This read operation. So this read operation is updated by this one. So here should be updated. So this read operation A, which is not updated by anyone, right? So this read operation is not updated by this one. So this read operation is failing here. So first condition is failed. If first condition is failed, directly we can say that S is not equivalent to S2, right? So when S is not equivalent to S1 and S is not equivalent to this one, so finally we can conclude that this schedule S is not a serializable, right? So this schedule S is not a serializable. This schedule is S is not serializable. It means this schedule is not serializable. So we can say there will be the inconsistency in that schedule. तो ये schedule क्या होगा? This schedule S is inconsistent schedule. ठीक है ना? अगर कोई शेड्यूल क्या नहीं होता, अगर कोई शेड्यूल सीरियलाइजेबल नहीं होगा तो वो क्या होगा? दैट शेड्यूल इज इनकंसिस्टेंट शेड्यूल. So schedule S is inconsistent here. So it is clear to all. Okay, fine. So let's see the next problem. And you try this problem at home. This is what homework. So it is given that write of A, read of B, it is read of A, read of B, read of B, then it is write of B. So this is interleaving schedule. So interleaving means this schedule is concurrent schedule, and let me say this schedule S. Then you will try for serializability, that this schedule is serializable schedule or not. So you try at home. This is homework for you, and let's see the next problem. Okay, you have one more example. You can try for that one also. Let me write down. So T1, T2. This is what read 1A, read 2B, then read 1C, write 1B, then read 2C, read 2C,
write one C, and then read one, it is read to A. Yes, this is another schedule which is also a concurrent schedule. Let me say this is also a schedule S, and you check for serializability. This schedule is a serializable schedule or not. So this is another question for homework. And next we'll discuss about the read write problem or read write conflict. I think you have copied this one. Read write problem. Read write problem, or we can say read write conflict. Read write conflict. So what is a read write problem? This is what transaction T1, T2. Here it is a read of A, and assume it is a write of A, right? So what we can say here? We can say that transaction T2 is updating data item A. Transaction T2 is updating data item A, which is already read by data item, already read by transaction T1. ठीक है, which is already read by transaction T1 which is uncommitted. ठीक है, तो ये क्या था, अनकमिटेड रीड था, और उसके बाद क्या किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है. सो दिस इज नॉन एज रीड राइट प्रॉब्लम. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रीड राइट प्रॉब्लम. तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, T2 अपडेटिंग A विच इज ऑलरेडी रीड बाय अनकमिटेड ट्रांजेक्शन T1. ठीक है, तो ये वाला ट्रांजेक्शन अपडेट कर रहा है, बट ऑलरेडी किसी ने क्या कर रखा है, इसको रीड कर रखा है, एंड विच इज अनकमिटेड रीड. ठीक है, तो इसको बोलेंगे रीड राइट प्रॉब्लम. एंड व्हाट आर द रीजन फॉर द रीड राइट प्रॉब्लम? Reason for the read write problem, one thing, schedule S is non-serializable schedule. ठीक है, schedule S is non-serializable. And second thing, at least one read write operation, at least one read write operation, at least one read write operation, or we can say at least one simultaneous read write operation, at least one simultaneous read write operation in schedule S, in schedule S, right? Then we can say yeah, just a minute. Right, so in this case we can say there is a read write problem. So I think read write problem is clear to you. Yes, read write problem is clear to all. Yes or not? Okay, clear. Fine. Let's see the next problem, which is a write write problem. Next problem is write write problem.
or we can say right conflict. Right problem or right conflict also we can say. What is right problem? So this is not committed. So what we can say that transaction T2 is updating data item A. Transaction T2 is updating data item A, which is already updated by uncommitted transaction T1. ठीक है, तो क्या कर रहा है यहाँ पे that transaction T2 is updating data item A. Transaction T2 is updating data item A which is already updated by uncommitted transaction T1. ठीक है, तो ये ऑलरेडी किसने अपडेट कर रखा है, इस अनकमिटेड ट्रांजैक्शन T1 ने अपडेट कर रखा है. सो दिस प्रॉब्लम इज नोन एज राइट कॉन्फ्लिक्ट और राइट प्रॉब्लम और वी कैन से साइमल्टेनियस राइट प्रॉब्लम. ठीक है, सो व्हाट आर द रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम? सो वी कैन से one thing schedule S is non serializable schedule. ठीक है, schedule S is what? It is a non serializable schedule. And second thing, at least one simultaneous right है. हाँ, at least one simultaneous right operation. At least one simultaneous right operation in schedule S, right? In schedule S, then we can say there will be the right problem. ठीक है, तो उस केस में क्या बोलेंगे? There will be the right problem. Clear? So this right problem is clear to all. Yes or not? What about others? I think it is clear to other also because this is simple problem. Let's see the next problem. Next problem is a lost update problem. Before that lost update problem, what we can say? How to avoid the simultaneous read-write problem, write-read problem and write-write problem. So how to avoid read-write, write-read, write-write प्रॉब्लम. ठीक है, कैसे अवॉइड करेंगे राइट प्रॉब्लम, रीड राइट प्रॉब्लम और राइट रीड प्रॉब्लम? ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए कुछ टर्म्स फॉलो करनी पड़ेंगी. वन थिंग दैट कंकरेंसी कंट्रोल कंपोनेंट शुड अवॉइड नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल. ठीक है, तो एक क्या करना पड़ेगा? कंकरेंसी कंट्रोल कंपोनेंट they should avoid the non serializable schedule. Concurrency control component they should avoid non serializable schedule. मतलब
कि शेड्यूल क्या नहीं होना चाहिए, शेड्यूल शुड नॉट बी नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या होगी, साइमल्टेनियस, सेकंड थिंग क्या होगी, ये तो फर्स्ट हो गया, और सेकंड में क्या होगा, दैट अवॉइड द रिस्ट्रिक्ट साइमल्टेनियस रीड राइट, राइट रीड और राइट राइट, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली अगर रीड राइट हो रहा है, राइट रीड हो रहा है, या फिर राइट राइट हो रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, right? So this is the possible case of avoidance of read write, write read and write write problem, ठीक है। तो ये अपने को फॉलो करना पड़ेगा। यस, इट इज क्लियर टू ऑल। यस और नॉट? ओके ओके, आफ्टर दिस वन लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, lost update problem, ठीक है। दिस इज द लास्ट वन, आफ्टर दैट विल फिनिश द क्लास। So next is lost update problem. So what is the role, this lost update problem? Initially assume that a value for the data item A is 0, right? Now this is what initial value for the data item A, which is 0. Here it is updating the data item A and it becomes 10, assume it is updating as 10, okay. After that this transaction T2 is also updating the value for A and now it become 20. So now the value for A is 20, okay. But what is happening before the commit of this update operation, what is happening, this transaction is being failed and we are doing rollback here, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोल बैक करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जब इसको रोल बैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो अपडेट यहाँ पे की गई थी वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, बिकॉज वी विल गो टू द इनिशियल वैल्यू ऑफ ए। तो इनिशियल वैल्यू क्या थी, ए की 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब इसने जो अपडेट की थी वो क्या हो गई, लॉस्ट हो गई है, राइट। दिस इज नोन एज लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये क्या होगी, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, ओके। तो यहाँ पे ये क्या कर गया था, फेल कर गया था ट्रांजेक्शन, और फेल होने की वजह से क्या किया, रोल बैक किया गया उस अपडेशन को, और अपडेशन जब इसको रोल बैक किया गया तो ये जो अपडेशन थी ये क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। दिस इज नोन एज लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। व्हाट आर द रीजन फॉर द लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम? Just a minute. What are the reason for the lost update problem? So one thing, simultaneous write write operation, ठीक है। One thing, simultaneous write write operation. This is the reason. And second thing, there is no other reason. We are not bothering about the
schedule is serializable schedule or non serializable schedule. ठीक है, तो second thing what we can say, don't bother about it is serializable schedule or non serializable. ठीक है, either it is serializable or it may be non serializable, lost update problem may exist. ठीक है, so we will not bothering about that serializability. Okay, so one thing we'll check that there is a simultaneous write or not. अगर simultaneous write है तो क्या कहेंगे, there will be the lost update problem, either it is serializable or it is non serializable, it doesn't matter. Okay, so what is the relation between the lost update problem and write problem? Let's see. This is what write problem and this is what lost update problem. Okay, so if there is a write problem, definitely it is lost update problem also. Okay, if I am standing here, it means this is what write problem. If it is write problem, it is also lost update problem. Okay, once we are standing here, what we can say, that if it is a lost update problem, it need not be write problem, right? So finally we have two statements. First statement is what, if it is a write problem, it is a definitely lost update problem. Is it true? If a problem is a write problem, definitely it is a lost update problem also. Is it true? Sandeep true, Priya also true. Yes, true. Okay, so definitely it is true. If the problem is write problem, definitely it is lost update problem also. Second statement what we can say, if the problem is lost update problem, definitely it is write problem also. Second statement is what, if it is a if it is a lost update problem, definitely it is a write problem. Is it true? No, it is not true, right? If it is a lost update problem, then what I told, if it is a lost update problem, definitely it is right. This statement is not true because of this reason. If I am standing here, it is a lost update problem, but it is not a write problem. So finally we can conclude that if it is a write problem, it is a definitely lost update problem. Reverse may not be true. Clear? So this is the story of a this is the story of the lost update problem. ओके एक स्टेटमेंट और है, उसके लिए बताना, इफ द ट्रांजैक्शन इज सीरियलाइजेबल इट मे सफर फ्रॉम लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम बट may not suffer from not suffer from write problem. If transaction is serializable, it may suffer from lost update problem. If transaction क्या है, if transaction is serializable, ठीक है, अगर serializable है तो क्या होगा, if transaction is serializable it may suffer from lost update problem. Is it correct? If a transaction is serializable or schedule is serializable, it may suffer from lost update problem. Yes, it may suffer from lost update problem. It means it is true. ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन अगर क्या है सीरियलाइजेबल है, वहां पे भी क्या हो सकता है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम आ सकती है.
राइट ना, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इफ ट्रांजैक्शन इज सीरियलाइजेबल, इफ ट्रांजैक्शन इज सीरियलाइजेबल, ठीक है, ये कह रहा है इफ ट्रांजैक्शन इज सीरियलाइजेबल it never it never be right problem. What about this one, this is true or false? ये बोल रहा है कि ट्रांजैक्शन क्या है, और ट्रांजैक्शन शेड्यूल भी कैन से ए शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल, इट नेवर बी राइट प्रॉब्लम। Yes, second statement, it is true or false? Sandeep saying true. Yes, what about others? Priya, Poonam, Neeraj, Mukesh, Meenu, Ekta. Okay, let me tell you, if a schedule is serializable, it never be or it never suffer from right problem. This statement is true, because right problem कब आएगी, right problem कब आती है, एक चीज तो ये satisfy करें that there is a non serializable schedule, और दूसरा क्या होगा, सेकेंड थिंग साइमल्टेनियस राइट ऑपरेशन। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशन क्या होंगी, सेटिस्फाई करेगा, है ना, और दोनों कंडीशन अगर अकर होती है, उसी केस में क्या बोलेंगे, देयर इज ए राइट प्रॉब्लम। ठीक है, अगर इसमें से एक भी कंडीशन क्या होगी, फेल कर गई, तो वहां पे राइट प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, और ये पहली कंडीशन क्या होगी, फेल हो गई है। अगर फर्स्ट कंडीशन फेल होगी तो क्या क्या नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि वहां पे राइट प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो शेड्यूल अगर सीरियलाइजेबल है तो वहां पे राइट प्रॉब्लम नहीं आएगी। Got it? सेकेंड कंडीशन ये है कि शेड्यूल अगर सीरियलाइजेबल है तो वहां पे कभी भी राइट प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या ये ट्रू है? सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, सो द बोथ द कंडीशंस आर okay, so these conditions are clear or not? Okay, so it is clear. Well, so now we'll finish the class for today and we'll continue tomorrow. ठीक है?